Good morning, guys. It's been a long time. आप लोगों से बात नहीं हुआ है. And today we are going for the Hyundai Venue Drive in Hyderabad. So this is going to be a review drive, first media drive. It's a very important product, of course. One of the very first sub 4 meter SUVs which had connected tech, very popular. So I thought I'll just go live before I reach the airport. I'm on my way to the airport right now. And in case you have any specific questions, because if you go to see, चेंजेस ज़्यादा नहीं है, इंजन सेम है, ट्रांसमिशंस भी सेम है, लेकिन फीचर सेट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है. सो अगर आप बात करें कि गाड़ी चलेगी कैसे, इसका माइलेज कैसा होगा, हैंडलिंग कैसी होगी, ऑल ऑफ दैट would pretty much be the same. But in terms of the features, in terms of the other competitors, सोनेट इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, नेक्सॉन एक बड़ा कॉम्पिटिटर है. वीजा भी दोज कॉम्पिटिशन. व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव? अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके, कुछ स्पेसिफिक चीज आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप वो चीज जो है वो कमेंट्स में डाल दें. हमें बताएं कि आप कोई स्पेशल स्टोरी हमसे करवाना चाहेंगे, कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहेंगे, तो वो हम जरूर वहां जाकर के स्पेशल कंटेंट आपके लिए बनाएंगे. तो अगर कोई स्पेशल स्टोरी आपको चाहिए नई वेन्यू के लिए, तो वो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए. आई ट्राई टू गेट दैट वीडियो डन दिस टाइम अराउंड. शहबाज, जेपलिन मोस्ट लाइकली अभी गोवा में एक ड्राइव हो रहा है 6 जुलाई को, और उसमें शायद जेपलिन आएगी. Seems like it's going to be the Zeppelin. I cannot be 100% sure, but we have received an invite. और Zeppelin, everybody has been looking forward to the Zeppelin. तो Zeppelin most likely आ रही है. और एक बार हम लोगों को लगा था कि शायद टीवीएस ने अल्ट्रा वायलेट को एक्वायर कर लिया है, और उनका जो इनवाइट था उसमें भी अल्ट्रा वायलेट लाइट थी, तो हमें लगा कहीं अल्ट्रा वायलेट का तो कोई लॉन्च नहीं है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जेपलिन ही लॉन्च होने वाला है. तो बहरहाल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेन्यू के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा. मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. टोक्यो एन जो है उसका ड्राइव हो रहा है 27 28 के आसपास, और जुलाई में आपको उसका रिव्यू भी मिल जाएगा. और जहाँ तक मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक कार, बिकॉज द इंजन, ट्रांसमिशन एंड जो महिंद्रा की टेस्टिंग है, जो उनका प्लेटफॉर्म है, हमने देखा एक्सयूवी 700 के साथ काफी इवॉल्व हो गए हैं वो लोग. स्कॉर्पियो एन जो है इस मंथ के एंड में लॉन्च हो रही है, और जैसे ही लॉन्च होगी वैसे ही आपको हम लोग उसका रिव्यू लेकर के आएंगे. इसके अलावा इस मंथ में काफी सारे लॉन्चेस होने वाले हैं. इफ यू गो टू सी, नई ब्रेजा आने वाली है, हाई राइडर आने वाली है. उसके बाद अगले महीने में BMW की G310 RR भी आने वाली है. नहीं, देयर इज नो अपडेट शहबाज. कोई अपडेट अभी तक नहीं है कि इंजन क्या होगा, बट आई एम अज्यूमिंग it's going to be a very new product, and I'm hoping that there would be an all new engine as well, because TVS is calling it the launch of a lifetime. So it is going to be a new platform, and I'm really hoping that they astound us with an absolutely new product with everything new. Talking about the launches, the venue, and then the Brezza, the High Rider, and immediately after that we'll be going for this Zeppelin, and after that the BMW's G310 RR. So a whole bunch of vehicles are lined up. Scorpio, of course, Scorpio is also lined up. इसके अलावा हम लोग ओला का भी इस बार, ओला S1 का भी बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं. दैट बाइक इज कमिंग वेरी सून टू अस, एंड रियल वर्ल्ड रिव्यू करेंगे उसका, देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, क्या क्या इश्यूज हैं. एंड दिस स्पेसिफिक लाइव, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल कंटेंट हम बना सकते हैं आपके लिए अबाउट द वेन्यू. ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अ, जो नए फीचर्स आए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में, उसके बारे में एक नया वीडियो बनाए.
We should list out all the new features on the venue and show them to you, and also tell you about the features that are missing. We are also planning a story on the comparison of the venue and the Sonnet, because अगर आप डीजल ऑटोमेटिक छोड़ दो तो पावर ट्रेन मोर और लेस सेम है. तो फीचर सेट के अंदर अभी वेन्यू और सोनेट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या फर्क है, वो सब चीजें भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो आपके लिए करें. शाहबाज, हो सकता है अपाचे RR 310 का इंजन हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट दैट TVS and BMW have. And if BMW have allowed them to have that engine for any other platforms also, then probably it may be the engine. But it's high time that TVS also had a brand new engine of their own. Ignis Zeta worth buying over Punch. Feel Tata is not reliable and services are not like Suzuki. Cosmos, yes, I somewhat agree with you. टाटा का जो रिसेंटली पंच आया है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट टाटा के इश्यूज आर विद द फाइनल प्रोडक्ट, एंड product doesn't hold up as well as some of the other Japanese products. So you're right there in terms of reliability, in terms of service, they still have some ground to cover. So of the two, I would suggest the Ignis Zeta. And if you want peace of mind, if you want better fuel efficiency and refinement, then the Ignis definitely is better option. सर, आप ये अगर मैप लगाने के तो अच्छा रहेगा, एक ऑल्टरनेटिव रूट बता रहा था. ओके. About the Tata Punch, we also reviewed the Citroen C3, and I would really want to know what you have to say about the Citroen C3, because I found it a very interesting product. I think the car per se, the product in terms of how it's built, in terms of how the strength of the steel used is so good. How the engines are fantastic, the suspension is amazing, the space is great, the design is pretty good. So Citroen have actually gone ahead and spent a lot of money in building that car. So बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को देखते हैं और बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें फीचर्स कम है. तो फीचर्स ऑफ कोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई ड्रोव दैट प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर जो इंजीनियरिंग है, सस्पेंशन, द शैसी, the steel that has been used, the engine, body, the design, all of that. What really makes a car was really, really, really strong. But it was somewhat beyond me that smaller things which probably could have been easier to incorporate. Like, for example, if you have to incorporate wireless charging in a car at a mass scale, it doesn't cost much for a manufacturer. Similarly, if you go to see uh, rear wash and wipe is something which is very important from a safety perspective. So ये जो दो चार यहाँ पे omissions हुए हैं, electric ORVMs, had they just included those things, it would really have been nice. And I was a little surprised because otherwise the product is really good. I can tell you that the 1.2 liter turbo petrol that they have introduced on the Citroen C3 is a revelation. It's a fantastic engine, strong mid-range, and if you like driving fast, in a straight line at least, that car can really go like the stink. So I'm surprised that despite having such a strong engine, they did not offer some features that should have been there. But otherwise, if you really ask me, it's a strong product. If you drive it, you'll like it. A lot of people asked me to share my opinion about what I thought about the lack of features. So I just thought I'll share it with you. Apart from that, going forward in this month, we plan to do a couple of feature stories also. And I am a big Jeep fan, so as you can see, it's raining now, and Maharashtra is really beautiful at this point in time. So I'm planning to take the Jeep Meridian out to some remote areas, some really beautiful areas in the Sahyadris, and I really hope to take the car to some really amazing places and give you a very beautiful looking video about it. So that's that, guys. If you watch this video, if you have any questions about the venue, if you want us to make any specific content, please put it down in the comment section. I'll make sure
that we do something about making a video relevant to your queries. And I really hope to see you very soon again. Plan to come back online uh, on a live session with you more often. Thanks a lot for joining in, and I'll see you soon again. Bye bye. Take care.